Good morning all of you. Welcome everyone. आज start करिबा हमर अछि schemes ऊपर हम already we have started जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करले आज करिबा हम ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम्स ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम्स निहाती तो important because हम OCS exam दोचंदी so definitely it will be more insightful and helpful also जब हम कहिबे कि questions prelims or mains so definitely it will help you out अच्छा समस्त प्रिपरेशन सब मु भाबुची पूरा एकदम मजिकी थिबो मजी बेसी टाइम नेबिनी जल्दी सारिया को चेष्टा करबी बट मन रखो दिस स्कीम्स आर रियली वेरी इंपोर्टेंट हला बिकॉज ऑफ सम hectic engagements I was bit delayed and postponed it was supposed to be yesterday right postponed करली तो आज देखि देबा क्विकली एंड देखि नबो समस्त ठीक अछि सो हमें कवर करबा आज इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रो ओडिशा गवर्नमेंट कोन करछ हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर पूरा पढिले राइट बर्तन ओडिशा गवर्नमेंट ऊपर हमें देखिबा हला My voice is audible to everyone. Let me know. Okay. First question हमें देखियो आज है ओडिशा गवर्नमेंट ऊपर हमें देखियो आज फर्स्ट that is अच्छा just second टिके बफरिंग होचे अच्छा फर्स्ट आज हमें देखिबा ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर गवर्नमेंट कोन रखी छी फर्स्ट विल सी कालिया स्कीम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द जदी देखिबा कि कालिया स्कीम कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा कोन इथरे कालिया स्कीम्स ता कोन व्हाट इज इट कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम हैला कृषक जय जगन्नाथ सतीश how are you yes good morning sangamitra okay very good so कालिया स्कीम्स ऊपर प्रथमे आज फर्स्ट देखिबा कि कालिया योजना राइट बेसी ने प्रीलिम्स रे शॉर्ट क्लिप बहुत जिंस कहि देबी हैला तो सेही अनुसार हमें मन रख सेही जो जिंस गुडा को दीज आर द ऑल प्रिसाइज जदि हम देखिबा कि प्रिसाइज स्टेटमेंट्स मींस प्रिसाइज पैराग्राफ डेफिनेटली हेल्पफुल प्रीलिम्स नो not only prelims mains also interview it's very helpful right good morning कालिया योजना प्रथम देखिबा इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स ए फ्लैगशिप स्कीम मन रखो हैला कालिया योजना सब बेले तमे फुल फॉर्म मन रखिथिबो से माने क्वेश्चन केंति पचाउछन कालिया कोन कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन हैला एंड इनकम ऑगमेंटेशन दिस इज द टोटल फुल फॉर्म ऑफ योर कालिया योजना राइट this is completely एटा मन रखियो परीक्षा पे एटा गोटे क्वेश्चंस तबर this is also a questions अच्छा वर्तमान देखिबा कोन ओडिशा गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन थिला the objective was to that agriculture prosperity and reduce poverty हैला objective is to agriculture prosperity and to reduce poverty sweating होछ रे ठीक अछि सो हमें जानले जोड़ा ब्लैक एंड सेडा सब तमे लिखिने गोटे छोटो छोटो खाता देखो जीएस रो गोटे बना करंट अफेयर्स खाता और सेइथरे मेन पॉइंट देखिने एतल तमे निजे रिवाइज करे तमे निजो खुशी लागो अरे ये तो मेरा लिखा हुआ मु तो निजे लिखि जेको हैला तो डेफिनेटली माइंड विल माने डेफिनेटली विल गिव यू अ गुड पे अच्छा कौन देखिबा थ्रू द implementation कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन जदि हम देखबा लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू कौन करियो द स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू lend farmers with all inclusive हैला all inclusive and flexible support system ensuring accelerated agriculture prosperity हैला accelerated agriculture prosperity basically जदि हमें देखिबा कि ना implementation of the कृषक assistance जदि हमें देखिबा कालिया स्कीम रे हैला इनकम ऑगमेंटेशन सो इटा गोटे गवर्नमेंट रो बहुत बढ़िया प्लान मन रखो इट इज अ वेरी डायनामिक प्लान आ गोटे वेरी लाइवली प्लान हैला टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आनिबा कारण बेसिकली जदि हम ओडिशा देखिबा ओडिसा रो बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहि भी ठीक अछि ओडिसा अछि पांचटा पॉकेट इंडस्ट्रियल हब अछि बट मेजॉरिटी ऑफ ओडिसा is more than जदि हम देखिबा 70% of people or 65 more than 65% of people ओडिसा is depends on agriculture as a livelihood agriculture the primary sector agriculture and allied activities so at the heart of the progress schemes like Kalia lies the
टू मोटिवेशन कौन टू एम्पावर द फार्मर्स बेसिकली क्या करिवो फार्मर्स मान को एम्पावर करिया पे ओके फार्मर्स एम्पावर ऑफ द स्टेट विथ फाइनेंस ऑप्शन दैट एनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ओडिशा सो बेसिकली मोटिव तमर जदि हम मोटिवेशन टा देखिबा मींस आई मीन कोन आ पछरे मोटो गवर्नमेंट रो मोटो कोन मेनली फार्मर मानकर ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कालिया योजना ठीक अछि अच्छा एंड आउ कोन दिला फर्दर एनहांसमेंट ऑफ दिस accessibility suitable for financial okay for financial services will further ensure agricultural productivity and increase income among the farmers एटा भी नोट करो कौन करिवो दिस इज आल्सो पॉइंट टू बी नोटेड दिस इज इंपोर्टेंट राइट कौन करिवो इनकम एमंग फार्मर्स पर्टिकुलरली द स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स एटी मन रख एटा जदी देखिवो परीक्षा रे केमती क्वेश्चन पके दो मीडियम ए भले दे प्ले विथ द वर्ड संगे से माने खेलंती हला स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स ठीक अछि स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स ठीक अछि स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स ए माने को पई हला मेजर स्कीम्स एटी मन रख स्मॉल एंड मार्जिनल एटी मीडियम होबनी स्मॉल एंड मार्जिनल माने जो माने क्षुद्र चासी जंदी तमे चासी देखियो पंजाब रे दे आर वेरी रिच बट इफ यू कम टू द यू नो द इन महाराष्ट्र विदर्भ ओडिशा छत्तीसगढ़ में झारखंड वेस्ट बंगाल मैक्सिमम देयर यू नो मार्जिनल फार्मर्स से माने को पई माने सारा किनिया पई भी पैसा नता सो सेही केस रे से माने जिबे मार्जिनल फार्मर्स स्मॉल तापर पुनी मार्जिनल राइट सो केते बढ़िया स्कीम एटी देखियो गवर्नमेंट केते बजट देछि एटी देखो गवर्नमेंट पुट अ बजट ओवर 10,000 crore finance देखो केते बढ़िया 10,000 crore scheme has been tailored to relieve the debt burden आज जदि इंडिया रे मन रख सबुठु बड़ जदि किछि प्रॉब्लम थाए राइट यस यस गुड मॉर्निंग ओके ना गुडा सु एमती रखुछो वेरी नाइस ओके फुद्दू क्वीन ओके वेरी गुड अच्छा जदि हमें देखिबा आज के इंडिया रे सबुठु बड़ प्रॉब्लम कोन फार्मर मानकर मन रख डेप्ट है सबुठु बड़ जिनस ऋण मैक्सिमम इंडिया जो देखा फार्मर माने जो सुइसाइड कर फार्मर माने जो माने छाड़ी की यू नो ऑक्युपेशन छाड़ी की से माने माइग्रेट करूचंती यू नो अर्बन एरिया को माइग्रेट करूचंती तार पछरे सबुठु बड़ अर्बन एरिया को माइग्रेट करूचंती फॉर यू नो इन सर्च ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस डेप्ट हैला एटा मन रख डेप्ट रिटन फार्मर्स फ्रॉम द डेप्ट ट्रैप कीपिंग pragmatic vision हैला माने practical vision to directly attack poverty by providing financial assistance to the vulnerable agriculture households landless laborers as well as marginal cultivators of the state ठीक अछि एटा हला मेजर ठीक अछि households landless laborers and as well as marginal cultivators of the state मानकर सबुटु एटा हला मेजर जिंस हला poverty आउ प्रोवाइडिंग आ सबुटु मन को गवर्नमेंट रो मेन मोटो अछि फार्मर मानकर डेप्ट केमति से जो ऋण कमे पे वर्तमान गवर्नमेंट कोन सब्सिडाइज रेट रे दोची बहुत जगह इंटरेस्ट माफ कर दोची हैला तो दैट इज व्हाट द मोटो ऑफ द कालिया योजना टू हेल्प द फार्मर्स दोज हु आर रियली मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स बेसिकली राइट सो इट इज प्रपोज्ड by the government of Odisha हैला इट इज प्रपोज्ड by the government of Odisha कालिया स्कीम brings under umbrella 92% of cultivators ठीक अछि 92% ऑफ द कल्टीवेटर्स को कालिया स्कीम आनी छी जस्ट इमेजिन कितने बड़ वाइड कवरेज करछि कालिया स्कीम ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट नीडी जो माने ऑलमोस्ट दे आर नीडी लैंडलेस कल्टीवेटर्स तो जो आर द नीडी लैंडलेस कल्टीवेटर्स हु कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम थ्रू द डीबीटी मोड माने मन रखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तुम निजे देखु तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आर रिपरकेशन जदि मैं कहबी मेन एंगल रे जदि देखिबो खाली जस्ट गोटे लाइन में कहूची बहुत लोक कोन हेले कालिया योजना रे गवर्नमेंट ऊपर से माने चाष गवर्नमेंट देला तांको भलो करिया पे हैला चाष करिया पे माने कोन कले सब मास अन्य की बसले केमते हमर मनी ट्रांसफर हो ठीक अछि आउ से माने काम करले सो बहुत जगह एटा ए जो प्रैक्टिस ता आल्सो मेक देम इन पॉवर्टी बिकॉज़ वंस यू हैव यू नो स्पेंड योर मनी in a directionless without any objective definitely one has to pay for it so that is your direct benefit transfer mode बुझी हला this is all about your कालिया scheme next we'll go for एटा बुझी हला is it okay to everyone ठीक है जी so this is all about कालिया scheme next we'll go for the प्राणी संपद समृद्धि योजना PSSY मन रखो प्राणी संपद समृद्धि योजना नेक्स्ट प्राणी
है प्राणी संपद समृद्धि योजना PSSY बेसिकली जदि हमें देखिबा है PSSY प्राणी संपद समृद्धि योजना एटा मन रख एटा गोटे नुआ स्कीम्स गवर्नमेंट रो है दिस इज आल्सो बहुत ही एटा हेल्पफुल हेची केवल ओडिसा रो लोकन पय जो माने खास करके मत्स्यजीवी अछंती जो माने पशु पालन करछंती मेनली एग्री सेक्टर्स को राइट is an umbrella livestock development schemes umbrella means I mean safeguarding तो माने umbrella माने भाबने छत्ता माने हैला ओके संगा हैला that is an umbrella means that is safeguarding scheme by the fisheries and the animal resource development कहा को एडी नोट करो एटा परीक्षा में हैला को के करछ तमर क्वेश्चन पचारिबो कि PSSY कहार को स्कीम अंडर आछि एटा आछि फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट मन रखो फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट एटा प्रीलिम्स क्वेश्चन गोटे मन रखो पीटी क्वेश्चन सेटा गोटे लेकिन को डिपार्टमेंट अंडर आछि फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ठीक अछि प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस it aims kon are aim it aims to empower farmers landless laborers SSG self help group हैला and by providing 50 to 60% 50 to 60% subsidies can you imagine का देला self help group farmers landless laborers हैला landless laborers women self help group and empower actually self help group जो concept आसी एटा basically for the empowerment of the women basically empowerment of the women by right providing 50 to 60% back end and subsidies establish and boost livestock business basically हैला boost livestock business ठीक है जी boost livestock business पाई again the schemes जदि देखिबा the schemes main objective is to boost production and income generation basically schemes रो main objective is to ठीक है जी to boost production and income generation हैला boost production and income generation दीटा income generation it is by increasing the केमती ए जो स्कीम रो मेजर ऑब्जेक्ट एटा भी नोट करो प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन राइट इंक्रीजिंग इनटू स्टेट्स कोन करिवो बाय थ्रू मीट हैला माने मीट आउ एग धर जने पशु पालन करछि माने छेली बिकुछि की कुकुड़ा बिकुछि तंकर कुकुड़ा कले कोन हो तार माने तार जदि हम देखो तार मीट आउ एग सो अगेन बेसिकली पोल्ट्री बेसिकली रूरल जो माने रिमोट रूरल लोकेशन से मान को पई एटा बेसी एप्लीकेबल right meat and egg productions to addressing its to rising nutritional and commercial demands basically also provide sustainable livelihood support to the weaker sections with a special focus on SC/ST category मन रखो SC/ST category के तामने इटी कोडी basically focus to remote location of the state remote location हैला special focus molecular special focus to remote location of the state basically मन रख remote location remember this one remote location को फिक्स करो माने जोटा कि मतलब कहली कोरापुट कि धर्म कहली मयूरभंज गोटे जेंति को कहबी कि बारे पानी वाटरफॉल सेठी मयूरभंज पाखरे सेठी गोटे रिमोट लोकेशन रे तमरो अछि कोन बहुत सारा गां अछि से माने सेठी फोकस कराला गवर्नमेंट देबा पे देखो गवर्नमेंट रो स्कीम्स ता किते दूर एक्सेस होची प्राणी संपत्ति योजना आगु जीवा पुणी राइट बुझियला की फोकस ऑफ द स्कीम रो की फोकस कोन ओके प्रथम देखियो स्कीम रो की फोकस कोन पोल्ट्री डेवलपमेंट में देखो एगुडा सब इंपोर्टेंट एगुडा सब लिखि भी नहीं जे तमरो मन भी रहबो इजी भी रहबो तुमको हैला बोथ प्रीलिम्स मेन सब जल्दी हम डिस्कस करते पोल्ट्री डेवलपमेंट रे वी सपोर्ट वेरियस स्केल्स ऑफ पोल्ट्री ऑपरेशन रे कोन जीवो इंक्लूडिंग ब्रॉयलर फार्मिंग माने कुकुड़ा चाष ब्रॉयलर फार्मिंग चिकन रियरिंग यूनिट्स माने गोटे जगह छोट जो छोट चिकन जो कहंती हैला छोट चिकन तांको नेकी तांको गोटे यूनिट से माने बनेबे मींस आई मीन बहुत सारा तांको सब अरेंजमेंट लाइटिंग दिया हो तांको बहुत सारा गोटे क्लोज रूम रे रखा हो टेम्परेचर मेंटेन करा हो ए सब स्कीम रे सेति पई पैसा दरकार तो ए स्कीम हैला प्राणी संपद योजना तांको मिलुची राइट सो एंड स्मॉल स्केल हैचरीज माने अंडा फुटिला पर जो हैच है कि ताको भी बहुत गोटे इंक्यूबेट टेम्परेचर रे रखा जाए देन ओनली द चिक्स आर विल डेवलप फुली राइट तापर से मन ताको बिजनेस कर पाबे नेक्स्ट to encourage and helps women self help group हैला to encourage and help women self help group basically एडी again
वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जंती देखियो कि सब इंडिया जदी बेसी अछि ताले इट इज योर साउथ इंडिया खास करी कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इज मोर हैला एंड कर्नाटका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज पर्टिकुलरली vulnerable tribal group PVTG districts through backward poverty area right. So this 5-year scheme has a budget of over केते अछि budget ए जो 5-year scheme टा तार budget अछि budget of 1000 crore ए जो अच्छी यार budget टा केते एठी लिखिनियो एटा हला 5-year schemes एटा गोटे question and having 1000 crore एटा गोटे तमरा questions में important note कर दियो से देथियो 10 years ना एटा 5 years में 10,000 crore budget अच्छी 10,000 crore budget ए sorry 1,000 crore budget 1000 कोटी टका with multi-crore allocation directed towards the poultry and small animal sub schemes हैला poultry and small animal sub scheme एते तमे भाबनी खाली चिकन संगरे बतक भी जीवो कुकुड़ा बतक छोट जदि जने पकड़ची अपार्ट फ्रॉम योर पिग also परे ए छोट छोट तमरो अलगा टाइप रो वर्तमान एमू फार्मिंग ऑस्ट्रिच एगुडा सब विभिन्न वेराइटी रो समान आनचंदी बर्ड रो भी विभिन्न वेराइटी अछि कुकुड़ा रो सो वेराइटी ऑफ animal sub scheme re ithre asuchanti and government is helping them again to remote government is focusing on the very remote location population mane village man and khas kariki tribal areas and other areas which is out of the mainstream from the city center right. next scheme jiba biju swasthya kalyan yojana मन रखा एटा सरला बुझियला समस्त को प्राणी संपद रे next will go for the scheme बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना देखो इथरे तमे लगतो बीएसकेवाई कोन ना सब बेले मन रख स्कीम्स कोडा गवर्नमेंट रे कोन हुए रिसेंट एडिशन हो जेमति मु लास्ट क्लास रे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर हम कथा हितले वर्तमान हमरो ओडिसा गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर बीएसकेवाई रे कोन आसे देखिबा कोन नुवा हिची हैला बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई is a scheme under the Department of Health and Family is a department of under Health and Family Welfare Government of Odisha ठीक अछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो बीएसकेवाई बहुत जन तम बीएसकेवाई किते लोक बेनिफिट पाउछन बर्तमान जेमते सेंट्रल गवर्नमेंट तमे आयुष्मान भारत ऊपर में पड़ते सेमते बीएसकेवाई हम ओडिसा सरकार कोन करिछि कोन रखि छी हमरो माने ओडिया लोकन पे खास करी कि जदि हमें देखिबा कि हमरो गुरुजन मानक पे दोज हु आर अबव 70 इयर्स व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज आल्सो राइट. So health and family welfare government of Odisha aims to provide universal health coverage with special emphasis on the health protection of vulnerable families and women. Hello, vulnerable families and women. Hello Rinki, hello, how are you? Okay. Hello, mainly kaha gala to provide universal health coverage dabo with special emphasis on the health protection of vulnerable families and women. Vulnerable families and women को special focus करा होची. Major objective कौन is to provide financial protection. हैला major objective is to provide financial protection and improve access to healthcare. हैला and improve access to healthcare services for the people of Odisha, particularly targeting economically disadvantaged sections. माने खाली हमरो रोनांती एल्डरली पीपल ता संग तांका फैमिली को भी हेल्प करा होच एंड स्पेसिफिकली को माने दोज हु आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो माने इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज अछंती से मानु के बेसिकली तांको हेल्प करा होच तै सेही फैमिली मानु सो एंटायर फैमिली को फोकस करा होची हैला एंटायर फैमिली की फोकस करा होची. बीएसकेवाई योजना जदि हमें देखिबा इट इज स्ट्रेस बैक टू 2003 और 4 हैला एग्जैक्टली मोर डेट ता मन रोनी ठीक अछि एग्जैक्टली डेट ता मन रोनी तो गोटे सेकंड देखो 2003-4 ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ नवीन पटनायक का गवर्नमेंट रे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जतले थिले सेही समय हला 2003 रो 5 भीतर सेटा इंप्लीमेंट हला एग्जैक्टली मोर माने ईयर मन नै बट इट इज मोर देन 2 डिकेड्स बैक मन इट इज मोर देन 2 डिकेड्स बैक इज इट ओके राइट. सो हम देखले कोन सो कोन however the BSKY has two components data component BSKY right. The state government will kon kariba bear full of cost. State government will bear full of health service delivered to all patients. Sabo patient ko it is full of delivered to all patients irrespective of income status and residence. Irrespective of income status or residence in all state government healthcare facilities. Sabo state government healthcare facilities starting from sub center level to district headquarters. हैला को टू सब सेंटर माने ब्लॉक लेवल नै कि डिस्ट्रिक्ट लेवल
and the government medical college hospital and blood bank level सब जगह applicable मन रख health is a greatest asset for the government माने citizens health is prioritized आमे माने पढिचंती we have studied in DPSP also हला health is wealth गोटे country रो major जदि asset देखिवो it is citizens you know people's health ठीक है सो से जो देखो समस्त ब्लॉक लेवल ने डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर्स all government medical college medical hospitals college medical college hospitals and your blood bank level सब जगह रे मन हेल्प कराउछ आगु जीवा सेकंड कंपोनेंट रे the state government जदि देखियो the state government will bear the cost of healthcare provided it will bear the cost of healthcare provided in listed private hospitals for over 96.5 lakh economically vulnerable families in the state जो उड़ाने अच्छा economically vulnerable 96.5 lakh यानी imagine माने पाखापाखी गोटे कोटी फैमिली की कवर होची एटी देखो 1 crore economically vulnerable families मन रखो जो माने पाखरे हैला जो माने पाखरे आर्थिक रे प्रॉब्लम अछि हैला about 1 crore families can you imagine माने 1 crore family माने तमे पर फैमिली पिछा तमे पकाओ let's say 4.5 माने 4 पकाओ more than 4 crores populations are covered ओडिसा रो 4 crore population more than 4 crore population ठीक अछि people more than 4 crore 4 कोटी रु ऊर्ध्व लोक इथरे कवर होचन कैन इमेजिन फॉर दिस वन again amounting annual health coverage of केते 5 lakh per family it is important it note करो 5 lakh per family and additional 5 lakh for the women members of the family माने 5 इथरे न्यू एडिशन कोन हला इथरे एटी लिखो न्यू एडिशन कोन हला 5 लाख family and additional 5 lakh for the women member of the family after exhaustion of the initial limit किंतु एथरे ଗୋଟେ कंडीशन अछि initial limit टा exhaust हला परे पुनी addition हबो राइट सेटा मन रखो thus bringing the total coverage 10 lakh per year हला total coverage केते 10 lakh per year अछि even the beneficiaries can select कोन करियो select the rooms based on comfort availability without out of pocket room resistant during the treatment जदि ट्रीटमेंट समय समान को लागिला नाही आमे गोटे भलो रूम नेकी रहबो ठीक एसी थिबो कि गोटे इंडिविजुअल सेपरेट थिबो कि टू शेयरिंग माने थिबो तो सेटा आल्सो दे कैन आल्सो यू नो दिस कार्ड आल्सो कवर अंडर दैट वन इत्ते सुविधा गवर्नमेंट दोछ right so this is the new incorporations in the BSQI project and BSQI for your information it is a project which is 2 decades back and the new incorporations you know and eventually by the with consultation with the central government department our government of Odisha is taking such initiatives okay आगु बढ़िबा नेक्स्ट आसिला मधुबाबू पेंशन योजना ठीक अछि मधुबाबू पेंशन योजना रे कोन आछि एथरे भी नुवा देखिबा मधुबाबू पेंशन योजना जदि हम देखिबा मधुबाबू पेंशन योजना रे एमबीपीआई रे मधुबाबू पेंशन योजना अंडर द सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट अगेन अंडर द सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट रे of persons with disabilities हला persons with disabilities को कवर करछ persons with disabilities हला disabilities here होची डिपार्टमेंट disability department government of Odisha social welfare schemes basically government eta cover करछ next this provide financial assistance to basically elderly citizens का को दोची elderly citizens को widows माने को दोची who are economically weaker so इथरे हमर कोन देखले मधुबाबू पेंशन योजना मन रखो इथरे भी क्वेश्चंस कोटा आसिला elderly citizens widows हला एटी बेसिकली एटा भी गोटे क्वेश्चंस प्रीलिम्स पाई दिस इज आल्सो ए क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स विडोज मानक पाई आउ एल्डरली सिटीजन पाई मधुबाबू पेंशन स्कीम योजना आगु देखिबा all the beneficiaries जदि हम देखियो all the beneficiaries being covered under the state old age pension scheme state old age pensions हला scheme 1989 1999 रे state and the Odisha disability pension scheme एटा भी गोटे क्वेश्चंस मन रखो तमको तमे जानि तो मधुबाबू देखो सब जिंस रे हम केते बेले भी प्रेजम्पशन के अजम्पशन न बना हम एटा कोन पचरे एटा पचले हम कर दो बट ए किछि जिंस पॉइंट था जोतर कि समाने से क्वेश्चन ने समाने तुमको कोन कर देबे प्रीलिम्स रे एलिमिनेट करिया पे सेवडा सब सिलेक्ट करते जेमती फॉर एग्जांपल कहली कवर्ड अंडर कोर्स को बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर कोथरे होतबे स्टेट ओल्ड एज पेंशन स्कीम जोटा कि 1989 रो एटा मन रखो 1989 रो ओडिशा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 1985 रो
होई थाई पारे एटा को नेकी एठी थोइ देबे 85 99 टा एपड़ नै आसी सो हे पूरा क्वेश्चन टा रॉन्ग हेजो तमर बोलटा से जो मन रखो ओडिशा एज ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1989 and Odisha disability pension scheme 1985 in the state are covered under scheme एइथे तमर स्कोर रोची ठीक अछि एइथे तमर कवर होची again this scheme is applicable to persons with benchmark disability जो माने होते तो persons with benchmark disability age and unable to normal work देखो एइथे भी दिव्यांग मानन को भी इंक्लूड करा हैची जदी हम देखिबा हला applicable कहा को applicable ए स्कीम रे मन रख एबे कि बेंचमार्क डिजाबिलिटी आगुरु थिला कोन विडो वुमेन एल्डरली माने जो माने सीनियर सिटीजन्स एंड एठी हम देखले एल्डरली सिटीजन्स माने सीनियर सिटीजन्स विडो ता परे पुनी ए स्कीम कवर कला का को डिजाबिलिटी माने दिव्यांग मानन कवर कला अनेबल टू नॉर्मल वर्क ड्यू टू हिज डिफॉर्मिटी हला तांकर दिव्यांग डिफॉर्मिटी और एनी अदर डिजाबिलिटी notified under the rights of persons with disability act rights of persons with disability act basically मधुबाबू पेंशन स्कीम टा सेथु का एप्लीकेबल राइट आगु बढ़िया पड़ी बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम देखिबा कोन बेनिफिट्स द बेनिफिट्स कैन बी एनालाइज्ड अंडर सच फॉलोज नंबर 1 फॉर द बेनिफिशियरी हु इज बिटवीन 60 to 79 years of age मन रखो बेनिफिशियरीज के 60 रु 79 60 to 79 years of age the pension would be 500 per month एडी नोट करो बयस केते थिबो 60 रु 79 80 वर्ष पर्यंत थिबो हैला बेनिफिट्स से माने पाइबे तांको केते मिलियो 500 बेनिफिट्स 80 ईयर एंड अबव 80 वर्ष रु उद्धव माने दीटा पेंशन एटा हला गोटे यू नो फेज 1 एटा हला तमरो जदी हम देखिबा कि एटा हला ग्रुप 1 रे समान करले गोटे 1 एटा हला ग्रुप 2 रे ए एज तक 80 एंड अबव ग्रुप 2 माने केमते समान डेमार्केशन करछन लोकन हेल्प करे केते देबो 700 टका माने पर्टिकुलरली 700 per month then the pension will disburse on the 15th of every month प्रति मास 15 तारिख रे डिस्बर्स हबो and on जन सेवा दिवस रे in the denomination of 100 rupees जब हेतला से एटा कि माने पर्टिकुलरली एई टाइम रे एटा सेवा जन सेवा दिवस रे एटा डिनोमिनेट हेतला एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम को माने एलिजिबल हेबे एइतरे मेजर पैरामीटर्स ऑफ द स्कीम कोन को माने एलिजिबल हेबे बहुत इंपोर्टेंट समस्त एंति नु जी नै सी कहबो कि नै आमे मधुबाबू पेंशन स्कीम नबो नो कोन नबो तापरे ठीक अछि द एप्लीकेंट इज ए परमानेंट रेसिडेंट और डोमिसाइल्स सिंस 20 इयर्स मन का एगुडा सब क्वेश्चंस एठी देइला किए से गोटे ओडिसा रो परमानेंट गोटे मेंबर हेतो माने यू नो योर रेसिडेंट हेतो इट्स एन हैबिटेंट हैला योर इनहैबिटेंट ओडिसा रो इनहैबिटेंट हेतु और डोमिसाइल ता पाखरे थियो डोमिसाइल सर्टिफिकेट थियो तहसीलदार पाखु दैट इज 20 इयर्स सर्टिफिकेट देखिया पड़ियो एडी जदी दितो 30 40 50 से भूल गेला 20 इयर्स मिनिमम से ओडिसा रे ताकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट थियो देन एप्लीकेंट शुड तमे कॉलेज बले तले एडमिट हो जते देखा हुए ना सही समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट ता दैट इज व्हाट द एप्लीकेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस योर इन्वॉल्विंग मोर्टल जदि हम देखिबा एनी क्रिमिनल जो माने अप्लाई करथियो तांकर नारे कोनोसी क्रिमिनल रिकॉर्ड नथिबो थर्ड रे हाउएवर द एप्लीकेशन शुड बी क्वालिफाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग ए या भितरु एटा हला मेजर एटा जो लिखिलो मेजर पैरामीटर्स में लिखिलो दिस इज योर मैंडेटरी मेजर पैरामीटर्स ठीक अछि मेजर पैरामीटर्स हाउएवर मिनिमम कोन एनी वन द एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी 60 इयर्स एंड अबव 60 वर्ष मिनिमम एंड अबव हेतिबो एप्लीकेंट इज ए विडो हेतवा दरकार माने आ भितर एनी वन ठीक अछि एनी वन ठीक अछि मेल फीमेल समस्त अवेलेबल करियबा तला ता भितर एटा दिया हिच इट शुड बी वन विडो एंड इट इज शुड बी मिनिमम 60 एंड अबव द एप्लीकेंट इज लेप्रोसी पेशेंट विथ विजिबल साइंस ऑफ डिफॉर्मिटी ता माने लेप्रोसी भी एटी कवर करछ जस्ट देखो लेप्रोसी दोज हु आर यू नो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ राधे राधे किए रे ये हमरो प्रदीप ओके वेरी गुड लेप्रोसी पेशेंट हेतिबो एंड आल्सो डिफॉर्मिटी सो इथरा हमने कोन जानले माने देखो केते सेक्शंस को कवर करछि एटी असला दिव्यांग असले विडो वुमेन असले एंड सीनियर सिटीजन ऑल क्लास आ भितर गोटे कोनोसी गोटे माने सैटिस्फाई करथो क्राइटेरिया वन ऑफ द क्राइटेरिया जोटी लिखली शुड क्वालिफाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग बट मेजर हैला एटा आइदर से डोमिसाइल सेतिबो 20 इयर्स माने ओडिसा रा हेतिबो इनहैबिटेंट परमानेंट ओडिसा रा माने स्थायी बासिंदा हेतिबो आ 20 वर्ष रहउतबो ताले 20 वर्ष रा तार डोमिसाइल सर्टिफिकेट थियो राइट सेटा सब देख सबमिट करिया पड़ियो
फोर्थ रे कौन द एप्लिकेंट ऑफ ए पर्सन 5 years of age and above जो भी एप्लिकेंट पर्सन थी 5 years or 5 years of age or above unable to do normal work due to his or deformity or disability, being blind or orthopedically handicapped, mentally retarded or your cerebral palsy माने भाबो कितने बेनेवोलेंट स्कीम गवर्नमेंट कितने भाबुची समस्त भाव देखो गोटे 5 वर्ष ऊर्ध्व को गोटे छुआ भी सी भी अप्लाई कर परियो जदी फर्दर ए कंडीशन थो से काम करि पानो तो माने दिव्यांग आइदर से मेंटली रिटायर्ड हेतो ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड हेतो और विथ सेरेब्रल माने दिमागी तौर से कमजोर थी ठीक अछि फोर्थ फिफ्थ द एप्लिकेंट इन द विडो ऑफ एन एड्स पेशेंट जदी विडो हेतो एड्स पेशेंट माने हिज हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ द एड्स एंड शी इज ए विडो that is also covered. The applicant is an AIDS patient identified by the state or the district department and a control society irrespective of the enable rule 6b clause 6b man rakho this is what kitte empathetic scheme. Seventh, the applicant is an unmarried woman, you are belonging to BPL category even if the women who are those who are bachelor I mean the unmarried women basically unmarried women emane achanti they are not married women unmarried women I mean basically young women jahar ki manna ki papa man ki nahanti he is like an orphan or he is or she is she is nurtured by any of the extended families tanku bhi government help kurchi through this BPL category scheme re dei such a nice empathetic scheme. The applicant has family income from all sources applicant family income from all sources not exceeding 24,000 पर annum जदि 24,000 मिनिमम रखाला जदि एप्लिकेंट जदि करिछि अप्लाई करिछि आ तार इनकम ता हला पर annum तार 24,000 अधिक नहीं देन he or she is eligible right. The applicant is not receipt of any other pension जदि एप्लिकेंट देखो he is not receiving any other pension from the government or the state government or organization aided by the government रे कोनसे अदर स्कीम्स रे से बेनिफिट न होनथो so there is a अच्छी से रूल्स अनुसार जदि सेटा criteria fulfill करतो then he or she is eligible right. Very good yes so this is all about हमें पढ़िले your मधु बाबू पेंशन स्कीम योजना ठीक अछि. Next we'll cover सुभद्रा योजना वर्तमान सुभद्रा योजना हमें देखिले सुभद्रा योजना वर्तमान गवर्नमेंट रो लाइमलाइट रे अछि सुभद्रा योजना समस्त वर्तमान सब लेडी वाली पहुंच दिस इज बेसिकली सुभद्रा योजना जदि हमें देखिबा दिस इज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू हला नवीन पटनायक का सरकार समय हिदला वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्जेक्टिव इज द वुमेन हला एम्पावरमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू कौन मोटो और ऑब्जेक्टिव इज टू वुमेन एम्पावरमेंट करिया पे बेसिकली सुभद्रा योजना देखिबा सुभद्रा योजना is a welfare scheme introduced by the government of Odisha को introduce करता है introduced by the government of Odisha to support women who is financially हला and support करिबा women मान को financially and encourage economic independence basically तांको माने financially support करिया संगरे तांको कोन करबो financially independent करिबो economically independent because women are always vulnerable to your abject to your we can say the torture hela domestic violence basically domestic violence hela because of their non because aji kehi bi dekuna gote women ro त्याग करतार sacrifice kon hela gote family kariya pe everything they counted on the basis of money that is what the subhadra yojana scheme is to making the women खास करके household women को empowered kariya pe ठीक है. The scheme focuses on empowering women by providing direct financial assistance helping them manage household expenses improve livelihoods hela and participate actively in economic activity the largest single woman centric initiatives in the state aiming to cover over 1 crore women aged 21 to 60 so ये जो scheme रे माने कहा को मेन टारगेट कले पाखा पाखी दे 1 crore women जो मानकर एज ग्रुप अछि 21 रु नै की 60 वर्ष मन रखो 21 to 60 तमरो क्वेश्चन कोठी आसो दिस इज आल्सो ए क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में एटा भी गोटे क्वेश्चंस सुभद्रा योजना रे वुमेन मानकर एज केते ग्रुप रखाई तुम सब जानि छ 1 crore वुमेन एटा गोटे एटा 1 crore वुमेन मन रखछ किंतु एज ग्रुप तुमको दे दिथु एटी 18 रु 60 भूल हेगा
21 वर्ष मिनिमम हेतुवा दरकार 21 to 60 years ठीक अछि ओके ओके वेरी गुड ओके थैंक यू ठीक अछि एलिजिबल बेनिफिशियरीज रिसीव 10,000 समान बेनिफिशियरी केते नेबे 10,000 एनुअली ओवर 5 इयर्स 5 वर्ष पई 10,000 एनुअली ओवर 5 इयर्स टोटलिंग 50,000 ट्रांसफर्ड डायरेक्टली वाया डीबीटी समान जो हबो डायरेक्टली वाया डीबीटी अच्छा सुभद्रा योजना जदि हमें देखिबा कि मोहन माझी सरकार रे अच्छा मोहन माझी सरकार रे नहीं आमे जा जानि एक्चुअली मु एटी कहि दउची मोहन माझी सरकार रे बिल्कुल आकु एटा करा हला बहुत जोर रैपिडली इंप्लीमेंटिंग हला बट जदि तमे देखिबो दिस वाज ए ब्रेन चाइल्ड ब्रेन जदि हमें देखिबा कि सुभद्रा योजना रो लॉन्ग बैक ब्रेन चाइल्ड ऑफ सेटा थिला यू नो पास्ट गवर्नमेंट रो ठीक अछि मना नहीं मोहन माझी सरकार रे एटा रैपिडली इंप्लीमेंट हला अगुर एटा इंप्लीमेंट एते भलो केनता बट आकु देखिबो ए योजनाटा एक्चुअली इट वाज फ्लोटिंग हला बट ब्रेन चाइल्ड हला अंक समय रो बट एटा इंप्लीमेंट करला डेफिनेटली मोहन माझी सरकार एटा रैपिडली घरे घरे पहुंचला हला वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट वन खास कर वुमेन मानन पे दोज वन समस्त घरे घरे बेनिफिट पहुंचन बट इट वाज फ्लोटिंग ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट Next, the program is expected to cover millions of women. है expected to cover millions of women across rural and urban areas of Odisha. ठीक है rural and urban areas of Odisha by ensuring direct bank transfers. Ensuring direct bank transfers, the government aims to maintain transparency. Maintain transparency and eliminate middlemen in the benefit distribution. ठीक है middlemen in the benefit distribution. So जदि हमें देखिबा कि एटा बेसिकली गवर्नमेंट एम टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी करिवो एंड टू एलिमिनेट मिडलमैन इन द यू नो इन बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अछि मिडलमैन आज का डेट रे गवर्नमेंट रो पैसा कोन मिडलमैन मान को करिया पे गवर्नमेंट वर्तमान ए जो स्कीम टा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जानि जो गवर्नमेंट कोन पे नेला direct benefit transfer government of India it approach kala and that is disseminated to all the applicable to all the state government they can follow that one it is because middleman case में बहुत सारा पैसा पहुंची पाला so government से जो direct account को transfer करा right because to fulfill the very objective of the social welfare schemes next basic eligibility conditions कौन the applicant must be a permanent resident of Odisha है is a permanent resident of Odisha to a permanent resident the only women applicants are eligible है only women applicants are eligible कौन आ भीतर मन रखो केवल women applicant only women applicant जो मानकर एज ग्रुप केते रहला हमरो एज ग्रुप है रेंज है 21 to 60 years है 21 to 60 years the applicant must be belong economically weaker sections को belong करथुवे the applicant must have valid Aadhaar card तंगरोडे valid Aadhaar card थिवो right the applicant should have a bank account linked with Aadhaar हैला bank account your linked with Aadhaar the applicant must not receiving benefits from similar government हैला benefits from similar government schemes that conflict with this program ठीक है which is conflict with this program right so these are the basics eligibility जदि हमें देखबा condition criteria for the Subhadra योजना right next mission शक्ति हला next स्कीम आसीबा हमें mission शक्ति मन रखो again this is for the again the empowerment of women हला women empowerment again women empowerment schemes हला empowerment scheme again women मान को एने माने रूट लेवल एम्पावर करे मिशन शक्ति देखिबा आगु को बेसिकली जदि हम देखिबा वुमेन एम्पावरमेंट खाली मन रखो इट्स नॉट ओनली टू द रूरल एरियाज इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू योर यू नो अर्बन एरियाज आगु देखिबा मिशन शक्ति इज द फ्लैगशिप वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा नीचे लॉन्च्ड इन 2001 रे रिसेंटली पुनी कोन हैला वर्तमान इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द 7 मिलियन रूरल पाखापाखी 7 मिलियन 70 लाख रूरल एंड अर्बन वुमेन into the you know more than 60,000 6 lakh more than 6 lakh self help groups eta got questions for hela this is also a questions for the prelims to promote gender equality
लीडरशिप एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इथरे कवर करछ कोथरे कला जेंडर इक्वालिटी मींस टू गिव देम जस्टिस टू द वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी माने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बहुत जगह देखथु कि काम से माने भी करिवे सिंसियरली करथु वुमेन माने बट मेल मेंबर माने अधिक पैसा न सो जेंडर इक्वालिटी करिया पे सब जिनस मिशन शक्ति बहुत बड़ एटा पूरा बहुत बड़ गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा जेमति गोटे स्कीम्स रे हला दिस इज आल्सो ओडिशा गवर्नमेंट इज कवरिंग नेक्स्ट लीडरशिप सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सब जिनस मन रख हमर सेंट्रल गवर्नमेंट संगे वी आर लिंक्ड राइट सो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट योर रूम फॉर दैट टू इंप्लीमेंट दिस वन लीडरशिप एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रहिले कोन 70 lakhs रूरल एंड अर्बन वुमेन प्लस 6 lakhs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एटा क्वेश्चन मन रख मेजर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम कोन स्कीम रो मेजर बेनिफिट कोन 0% देखो होची 0% बैंक लोन्स अप टू 3 lakhs आर प्रोवाइडेड बैंक लोन्स केते रहबो अप टू 3 lakhs मन द बैंक लोन्स रहबो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू एनकरेज livelihoods and business activities को रहबो 3 lakhs हला 0% एटी मन रख तमर परीक्षा रे एटा गोटे क्वेश्चंस रहबो केते कि विथ तुमको क्वेश्चन दे दी तो विथ 2 to 3% तमे मार दबो फटके नो 0% इन इंटरेस्ट केते 3 लाख हला 3 लाख पर्यंत 3 लाख रे लोन्स अप टू एटी कोन लिखा है मन रख अप टू 3 lakhs 3 लाख ऊपर तमर लागू बट जदि जणे नो 3 लाख भितरे बैंक रो लोन ताल ताको 0% इंटरेस्ट दिया इन मिशन शक्ति सोसाइटी योजना इट प्रोवाइड्स interest free bank loans up to 1 lakh for your self help groups members right and executive committee members basically to purchase a scooter adding their mobility outreach saman gote scooter kinia pe mane tanku seta encourage karauchu hela to purchase a scooter basically okay next third point in livelihood and skill training program jodi hum dekho livelihood and skill training program re the scheme provides capacity building scheme kon provide korche capacity building marketing linkage and financial assistance for and scaling up to farm and non farm business hela eti kon dikhauje livelihood and skill training program the scheme provides capacity building neuchi marketing linkage and financial assistance hela for starting and scaling of farms and non farm business basically farm and non farm business under such schemes SSG are actively engaged in various public services various public services mai rochi including running PDS public distribution schemes PDS schemes outlets managing paddy procurements and supplying supplementary nutrition anganwadi centers mane dekho इधर कितने कवर होची ए स्कीम रे कोन such an various type रे कवरेज होची PDS रोची including running PDS schemes रोची outlets पैडी प्रोक्योरमेंट जेंति पंजाब हरियाणा रोच वाला माने जो भी समय चाष करछन पैडी प्रोक्योरमेंट यू और वी कैन से द सेरियल्स हला खास करके हम देखियो दे राइस हला गहम हमर एते हुएनी राइस देन सप्लाइंग सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन से द आंगनवाड़ी सेंटर्स सो इत्ते बड़ गोटे वाइड कवरेज करछ मिशन सर ओके ठीक अछि दिस इज ऑल अबाउट द मिशन शक्ति प्रोग्राम इंपोर्टेंट पॉइंट्स मन रख एटी अगेन कहि दे परीक्षा पे 0% एटा गोटे पहला 0% interest up to 3 lakhs super एटा क्वेश्चन रहइबो क्वेश्चन 70 million माने 70 lakhs 7 million 7 lakhs हला 7 million माने 70 lakhs रूरल अर्बन आउ 6 lakhs हमर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स माने इथरे इन्वॉल्व अछंती नेक्स्ट मिशन शक्ति रे स्कूटर योजना रे 1 lakh दिया होचे एसएसजी मेंबर्स हला कम्युनिटी को स्कूटर परचेज करबे सो दैट दे कैटर देयर ओन बिजनेस आज के डेट देखियो गां सब जगह गवर्नमेंट हेल्प दोची दिन सब ठीक अछि वर्तमान नेक्स्ट देखिवा लास्ट को मो स्कूल again this is to strengthen government रे major objective kon to strengthen elementary based education to strengthen elementary education to strengthen elementary education system को to strengthen 80 मन रख मो स्कूल रो सब बळे मन रख गवर्नमेंट जो स्कीम करूची ता पछर ऑब्जेक्टिव कोन माने गवर्नमेंट रो विजन ला कोन टू स्ट्रेंथन द एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत पिला माने स्कूल ड्रॉप आउट हे से जो वर्तमान मिड डे मील स्कीम से गुडा सब रखा हो सो वेरी बेसिक सब्जेक्ट मन रख एजुकेशन माने जो कहंतनी मुंडरे जदी हमरो बुद्धि रहबो देन ओनली एनीवन कैन अप्लाई
aji we are flying rockets, we are going to different planets. It is all because of vidya, buddhi. So education is the root, and that is very development of prosperity. Very very root or root element of the prosperity, education. So education is samastanga pai education. Mo school abhiyan dekhiba, Mo school abhiyan is an citizen government, is an citizen government partnership, basically citizen government partnership program in Odisha, Odisha India re basically aimed at actually it cover hochi tomar sarva shiksha abhiyan. Tum kahi dochi Mo school jota asuchi, this comes under comes under comes under kaha sangare your jodi am dekhiba sarva shiksha abhiyan, sar government ro central government ro jo achi सर्व शिक्षा, ठीक अच्छे, सर्व शिक्षा अभियान रे गवर्नमेंट रो जो आसुची सर्व शिक्षा अभियान रे एटा आसुची सर्व शिक्षा अभियान मन रख ए जो स्कीम ता सर्व शिक्षा अभियान रे गवर्नमेंट रे एटा आसुची मोस्ट फुल योजना. सो से कौन है प्रोग्राम इन ओडिशा एम्ड ऑफ रिवैम्पिंग गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स, बेसिकली गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स. इट एनकरेजेस alumni, encourages alumni and the community to contribute money, money, materials and services to the schools with the state government providing matching grants, basically, right, providing your matching grants. Further, the program focuses on community involvement. The program focuses on the community involvement, infrastructure development, community involvement infrastructure development, quality education, and creating a conducive learning environment, produce kala. So इतने कितने बड़ा इटा भी questions मन रखो. This is also important prelims रे, your statement based questions ପାଇଁ definitely it will helpful. Your infrastructure development रहिबो, quality education रहिबो, and creating conducive learning environment ପାଇଁ रहिबो. क्वालिटी एजुकेशन मन रख बर्तमान क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपोर्टेंट. क्वालिटी एजुकेशन नहीं. नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स योर ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, एलुमनाई कमिटीज एंड रेगुलर मीटिंग्स टू एड्रेस स्कूल नीड. स्कूल रो जो नीड होची दैट इज मोर इंपोर्टेंट. कौन पे स्कूल पे दरकार आज का डेट रे क्वालिटी एजुकेशन दिया होनी. स्कूल तो अच्छी स्मार्ट बोर्ड अच्छी पढ़िया कि ना जदि के पढ़िया अच्छी सी अध घंटे पढ़ले फोन रे गपिले. So these are the lots of complaints are coming from the remote villages and other parts of the districts normally. Remote districts जो माने अच्छी खाली ओडिशा नो सब बहुत जगह रे इंडिया रे देखा होची. So quality education is बहुत जरूरी. गोटे पिला गोटे आसी ताकू आमे डेवलप करे, दे आर आवर रेस्पोंसिबिलिटी. जदि सेटा न भाबी कि आमे हमर निजर अम्यूजमेंट पे गपिबे देन दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग. So again, the initiative has led to positive changes. Leads to positive changes with alumni and community members actively participating in school development. Those who are actively participating in the school development. Excuse me. So Bartaman alumni ki government कौन पे नोची, because to basically the initiative, again I am repeating, the initiative is to has led to positive changes with alumni and community members actively participating in the school development. So government देखला मैं अकेला मेरे बस का बात नहीं है, मैं एकला करी परिबी नहीं. आप कौन नेला से बेसिकली कौन नेला है पई alumni की नेला और community. एटी कौन न्यू एडिशन एटी हमना क्वेश्चंस पई. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. मो स्कूल रे एटा भी तमर प्रीलिम्स मेंस सबुथरे पई इंपोर्टेंट. प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सब जिंस पई एटा दरकार. गवर्नमेंट कौन पई एई फोकस कला, कहीं के ऐड कला, why government added, why it लिखिने, why government involved or involved your alumni and community. कहीं की गवर्नमेंट एटी इन्वॉल्व कला alumni और community. तार रीजन है मन रख community इन्वॉल्व बेले कौन लो मेजर स्केल रे मॉनिटरिंग ता रहिबो. कौन भूल कौन ठीक होची. alumni करिया दरकार माने जी निजे पढ़ी की जाई था जो जगह रु तार सेति के भल पाइबा थाए. अरे मु आज ए स्कूल रु पढ़ी मु ए जगह रु जाई तो तार सेति की इन्वॉल्वमेंट रहइबो, माने दैट टू बी हार्टली इन्वॉल्वमेंट रहइबो. सो दैट इज व्हाट देयर इज एन क्वालिटी मॉनिटरिंग and quality procurement of the education system or strengthening.
दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ऐड कला काकू एलुमिनाई आउ community. Some of the interview pachal you have to say this one, these are the things. Why the very objective of incorporating addition of this alumni and the community in the more school abhiyan. Government रे बहुत बड़ा गोटे मन रख आगुरी एगुड़ा सब ऐड हेई नथला काकू alumni आउ community बट वर्तमान एथि पे ऐड कला गवर्नमेंट आहुरी आको आपरे फोकस कला because to make the quality of education more better, quality of education को better करिया. That is what most school abhiyan रो major motto. ठीक अच्छे. सो एठी गोटे देखिबा एठी तमे डायग्राम रे देखुछ कोन आमे पढिबू आमे गढिबू श्रेष्ठ हबू. दिस पम्प्स लाइन्स आर गूजबम्प्स माने गोटे कंट्री रे मन रख तो वेरी फ्यूचर ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स चाइल्ड को कहे सेमानी भविष्य सेमानी गढिबे देश को. सो दैट इज व्हाट द वेरी प्राइम रोल इज योर एजुकेशन. तो से जो गवर्नमेंट रो एटा देछि गवर्नमेंट रो जो स्कीम्स रेडी कोन हला एटा भी गोटे पंच लाइन टा आमे पढिबू हला ए जो लोगोटा आमे पढिबू आमे गढिबू श्रेष्ठ हबू. सो दैट इज व्हाट we need to study, we need to develop, and we are the best. So that is what the major objective of this most school abhiyan, which is in a part of your central government schemes like sarva shiksha abhiyan जोटा कि हम देखले sarva shiksha abhiyan रा बेस्ट एटा most school abhiyan. ठीक है सर्व शिक्षा अभियान है गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सब. ठीक है दिस वन. ठीक अच्छे ताले आज ताले मु एतिक रखुची. विल अगेन विल मीट मु निश्चय परीक्षा तमर परीक्षा टाइम अच्छी निश्चित रूप आज जो पढ़ेली जहाँ भी एतिक जतिक आम कवर कले आज है मो स्कूल अभियान हो कि एपटे तमर मिशन शक्ति हो कि एपटे सुभद्रा योजना हो जो भी 5-7-8टा स्कीम मधुबाबू पेंशन स्कीम हो कि बिजु स्वास्थ्य जो है तापरे प्राणी संपद योजना आउ नेक्स्ट जब देखिए कालिया स्कीम. तो ये जो भी स्कीम्स आम आज कवर कले या पछरे मन रख सब बेड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आम भल कि पढ़ा भल नोट बनैबा आउ परीक्षा रे करबा. आम कौन से जिनस को निजर आजम्पशन अनुसार पाठ पढ़ानी आजम्पशन अनुसार पढ़ी पारे केबे भी हमको लाभ हम. इट इज ओनली चीटिंग आवरसेल्व्स. ठीक अच्छे परीक्षा अच्छी से जो जल्दी छाड़ू तापर टिके अनाउंसमेंट फॉर्मल कर दोची. ओडिशा स्किल्स एकेडमी रू दीज आर माय स्टूडेंट्स दिस ईयर आल्सो दे आर विथ गुड रैंक्स एज वन क्वालिफिकेशन. देयर माय वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स लाइक सौरभ योर रामो एंड श्रीकांत इज रिपीटर. एथर गत थर 300 केते रैंक थला एथर पुनी बहुत बढ़िया रैंक 129 आल्सो हिमालय. दे बोथ आर द ओटास ऑफिसर देयर रैंक ग्रुप हैला. और दीज आर द सौरभ दीज आर द स्कीम्स हैला. ए पिला माने हमर अछंती GS बैच ऑलरेडी स्टार्टेड हैला ऑलरेडी स्टार्टेड हे गलानी. दो जो आप ए ईयर पे दो जो आप इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट अस. आल्सो द ऑप्शनल्स फाइ भी एज वी नो प्रीवियसली मु कहछि. ठीक अछि. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. एग्जाम्स जोटा कि पहर दिन अछि मो तापै बहुत बहुत शुभकामना समस्त को. ऑल द वेरी बेस्ट. एग्जाम्स पूर्व खाली गोटे टिप्स देबी be always calm, stay calm and be focused है किछि करनी नुआ जिनस किछि वर्तमान पढ़नी. only focus on revision strengthen your revision part. more you revise more you are closer to to success. means तते भूल हो तमर सक्सेस माने तमर जो ब्लंडर मिस्टेक जो होछ नेगेटिविटी सेटा कमिबो. your answer should be very precise and accuracy सबले मन रख हैला. माने पढ़ला बडे बेसिक अटेम्प्ट कर दरकार नहीं. मैक्सिमम 60 रु 70 क्वेश्चंस मैक्सिमम कर 70-75. डोंट गो फॉर बियॉन्ड दैट वन. साइकोलॉजिकली मु कहूची जेते कम अटेम्प्ट करिवो सेते अधिक फोकस करो सेते कम तमर भूल हो नेगेटिव मार्किंग सेते कम हो. संडे दिन तमर जो हम डिस्कशन टा रखिबा हैला परीक्षा सरला परे हैला तापरे मु डिस्कशन टा रखिबी योर प्रीलिम्स पार्ट रो जो GS डिस्कशन टा हैला तापरे सला हम विल अनाउंस दैट वन. सो टिल देन भला भाबरे पढो. once again all the very best for your exams. और जो माने न्यू कमर्स अच्छा कमिंग ईयर पे टाइम भी बेसी नाही पढ़ी चलो. डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर दिस ऑल सच एनालिसिस. आगु पुनी आहुरी मु अनाउंस करी भला भला टॉपिक नेके म आसीबा. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. ऑल द बेस्ट हैला एंड हैव ए गुड डे. जय जगन्नाथ. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीवन. पुणी देखा हबो तमने पढ़ो हबे हैला एनालिसिस वीडियो नेकी जा पढ़ो. विल मीट अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. जय जगन्नाथ. थैंक यू सो मच.